Hello my dear students, myself Vishal Virani and today we are going to discuss about the class 12 statistic part 2 and lesson number 1. Lesson number 1 is that probability, okay, probability. And in this lecture today we are going to discuss about the topic is that selection with replacement and without replacement. Selection with replacement and without replacement. For example, if any basket there is a 4, total number of flower is 4. If any basket there is a 4 flower and we have to select one flower one by one. We have to select one flower one by one. First of all, we have to select first flower out of 4 flower. Yes. So the remaining flower in the basket will be 3 if we select one flower. Yes. Then we have to select a second flower, but there is a two condition. First condition is that with a replacement of first flower and without replacement of first flower. यस, बास्केट में 4 जो फ्लावर है उसमें से हमको एक फ्लावर है वो 1 by 1 सिलेक्ट करना है. पहले हमने पहला फ्लावर सिलेक्ट कर दिया तो बास्केट में अब कितने फ्लावर रहे हैं? 3 फ्लावर बचे हैं. क्लियर? ओके. तो अब हमको दूसरा फ्लावर सिलेक्ट करना है, लेकिन किस तरह से सिलेक्ट करना है कि पहला फ्लावर है उसको रिप्लेस करके या तो विदाउट रिप्लेसमेंट. रिप्लेस करके मीन्स कि पहला जो फ्लावर है उसको हमको बास्केट में फिर से रख देना है. मीन्स सिलेक्शन विथ रिप्लेसमेंट, पहले फ्लावर को फिर से हमको बास्केट में रख देना है. तो अब टोटल कितने फ्लावर हो गए? 4 फ्लावर हो गए. यस. तो अब हमको दूसरा जो फ्लावर है वो किस में से सिलेक्ट करना है? फिर से हमको 4 फ्लावर में से सिलेक्ट करना है. क्लियर? तो ये बात हुई विथ रिप्लेसमेंट. ओके. नाउ विदाउट रिप्लेसमेंट मीन्स हमको एक फ्लावर, पहले हमने फर्स्ट फ्लावर सिलेक्ट कर लिया तो बास्केट में कितने फ्लावर रहे? 3 फ्लावर बचे हैं. ओके. अब हमको दूसरा फ्लावर है वो सिलेक्ट करना है. दूसरा फ्लावर सिलेक्ट करना है लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट. विदाउट रिप्लेसमेंट मीन्स हमने जो पहला फ्लावर लिया है वो अब हमको बास्केट में रखना नहीं है, उसको रिप्लेस नहीं करना है. क्लियर? अब पहले फ्लावर को हमको बास्केट में रखना नहीं है, उसको रिप्लेस नहीं करना है. तो अब बास्केट में कितने फ्लावर है? अब बास्केट में 3 फ्लावर है. क्लियर? तो दूसरा जो फ्लावर हमको सिलेक्ट करना है वो किस में से करना है? वो 3 फ्लावर में से सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमने जो पहला फ्लावर सिलेक्ट किया हुआ है उसको हमने बास्केट में रिप्लेस नहीं किया हुआ है. तो बास्केट में अब कितने फ्लावर बचे हैं? 3 फ्लावर बचे हैं. और ये जो दूसरा फ्लावर सिलेक्ट करना है वो ये 3 फ्लावर में से सिलेक्ट करना पड़ेगा. क्लियर? तो यहाँ पे कोई भी सिलेक्शन है तो वो दो टाइप्स के हो सकते हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट एंड द विथ रिप्लेसमेंट. क्लियर? ओके. सो सिलेक्शन विथ रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट. when units are to be randomly selected one by one. Yes, we have to select a unit one by one. पहले पहला फ्लावर सिलेक्ट करना है, बाद में दूसरा फ्लावर सिलेक्ट करना है, बाद में तीसरा फ्लावर का सिलेक्ट करना है. लेकिन पहले हमको पता होना चाहिए कि विथ रिप्लेसमेंट करना है कि विदाउट रिप्लेसमेंट करना है. दोनों की कंडीशन अलग अलग होगी. क्लियर? ओके. लेकिन ये तो फिक्स है कि हमको कैसे सिलेक्ट करना है? 1 by 1 सिलेक्ट करना है कि पहले हमने पहला फ्लावर सिलेक्ट किया, बाद में दूसरा, बाद में तीसरा. क्लियर? ओके. व्हेन द यूनिट्स आर टू बी रैंडमली सिलेक्टेड 1 by 1 फ्रॉम द पॉपुलेशन, द सिलेक्शन कैन बी डन इन 2 वे. यस, the selection can be done in a 2 way. First way is that selection with replacement, and second one is that selection without replacement. Yes. Okay. So if the selection of a unit from the population in any trial is done by replacing. यस, यहाँ पे हमने जो कोई भी फ्लावर लिया है उसको, फर्स्ट फ्लावर है हमने लिया है तो उसको हमको फिर से रिप्लेस कर देना है. फिर से हमको फर्स्ट फ्लावर को बास्केट में रख देना है और बाद में सेकंड फ्लावर है वो सिलेक्ट करना है. क्लियर? ओके. इफ द सिलेक्शन ऑफ यूनिट फ्रॉम द पॉपुलेशन इन एनी ट्रायल इज डन बाय रिप्लेसिंग द यूनिट सिलेक्टेड इन द प्रीवियस ट्रायल बैक टू द पॉपुलेशन, देन दैट सिलेक्शन इट इज कॉल्ड एज द सिलेक्शन विद द रिप्लेसमेंट. क्लियर? हमने जो प्रीवियस ट्रायल में जो कोई भी फ्लावर लिया था, मीन्स के फर्स्ट ट्रायल में जो कोई भी फ्लावर लिया था उसको हमको फिर से बास्केट में रख देना है और बाद में सेकंड फ्लावर सिलेक्ट करना है. Clear? Okay. Then the second way is that selection without replacement.
यहाँ पे हमने जो पहला फ्लावर लिया है था बास्केट में से, वो अब हमको बास्केट में रखना नहीं है। कब नहीं रखना है? जब हम दूसरा फ्लावर सिलेक्ट करने जाते हैं तब हमने जो पहला फ्लावर बास्केट में से सिलेक्ट किया था वो फिर से हमको बास्केट में रखना नहीं है, वो हमको हमारे पास ही रखना है। क्लियर? अब वो हमारा हो गया है और अब हमको दूसरा फ्लावर है वो सिलेक्ट करना है। क्लियर? ओके। सो इफ द सिलेक्शन ऑफ अ यूनिट फ्रॉम द पॉपुलेशन इन एनी ट्रायल इज डन बाय not replacing the unit selected in the previous trial. Yes, previous trial में हमने जो कोई भी यूनिट सिलेक्ट किया है उसको रिप्लेस नहीं करना है. Trial back to the population, then the selection is called the selection without the replacement. Okay, understand this selection with the replacement and without replacement by taking one example. Example is that there are 12 screw in a box which has 4 screw are defective. Okay, there are total 12 screw and out of the 12 screw there are 4 screw are defective and 2 screw are randomly selected one by one. We have to select a 2 screw but one by one. Okay, first one is the with the replacement. First one is the we have to select a 2 screw one by one with the replacement, and second one is that without replacement, means we have to select a 2 screw out of the total 12 screw one by one without replacement, and find the probability both the screw selected are defective, and we have to find the probability that both the screw are of a defective. Okay, first of all, for the first way of the selection is that with the replacement. Okay, with the replacement. Okay, in this case we have to select a screw one by one, so we have to find the probability of the selection of the first screw and then find the probability of the selection of the second screw. Yes, so probability of the selection of the first screw. Yes, probability of the selection of first screw. Yes, and it is denoted by P of A1. Suppose this is the event A1. Okay, so we have to find the probability. Probability is the number of favorable outcome upon number of total possible outcome. Okay, we have to select first screw. Yes, probability of the selection of first screw is defective. Is defective. We have to find the probability. Both the screw selected are defective. Okay, probability of the selection of the first screw is defective is P of A1 is equal to M by N. M is the number of the favorable outcome of this event A1. Okay, how many it will be? We have to select number of the favorable outcome. We have to select one screw. Yes, first screw. We have to select first screw out of the defective screw. Yes, so the defective screw, how many is defective screw? There is a total 4 defective screw. Yes, so we have to select one screw out of this 4 defective screw. So this is our number of the favorable outcome. Now n is the number of the total possible outcome, and how it will be? We have to select a first screw. Yes, out of total 12 screw. Yes, so this is the number of total favorable outcome. Done. Okay, now 4C1 is equal to 4 and 12C1 is equal to 12, so it is equal to 1 by 3. Clear? Okay, but this is the probability of the selection of the first screw. Yes, but we have to also select the second screw. Yes, now probability of the selection of second screw is defective. Yes, probability of the selection of second screw is defective, but which way? With the replacement. Okay, so and this event is denoted by A2, then the P of A2.
P of A2 is equal to m by n. Yes, m by n. And how many favorable outcome? Now we have to select a second screw with a replacement. Yes, हमने जो पहला स्क्रू डिफेक्टिव जो सिलेक्ट किया था, क्लियर, हमने जो कोई भी पहला स्क्रू है वो सिलेक्ट किया हुआ था, वो वापिस हमको रख देना है बॉक्स में, वापिस हमको बॉक्स में रख देना है, क्लियर। और बाद में हमको सेकंड स्क्रू है वो सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमारा जो सिलेक्शन है वो विथ रिप्लेसमेंट हो। ओके, तो बॉक्स में अब टोटल कितने स्क्रू हो गए हैं? जब हम सेकंड स्क्रू सिलेक्ट करने जाते हैं तब बॉक्स में टोटल कितने स्क्रू है? 12 स्क्रू है। यस, हमने जो पहला सिलेक्ट किया हुआ था वो हमने फिर से बॉक्स में रख दिया है, तो टोटल 12 स्क्रू है। और टोटल कितने डिफेक्टिव स्क्रू है? टोटल 4 डिफेक्टिव स्क्रू है। यस, क्योंकि हमने जो पहला सिलेक्शन किया था स्क्रू का वो तो हमने फिर से बॉक्स में रख दिया। यस, सो नाउ वी हैव टू सिलेक्ट अ सेकंड स्क्रू आउट ऑफ द टोटल 12 स्क्रू। Yes, and we have to select a defective screw. We have to select a second defective screw out of this 4 defective screw. Yes, so this is same as previous case. Yes, number of the favorable outcome for the event A2 is that we have to select one screw out of 4 defective screw. Yes, and we have to select second screw, and second screw number of the second screw is the 1. Okay, so we have to select the second screw out of total 12 screw. Okay, so the probability is same as previous case, 4 by 12 and is equal to 1 by 3. Okay, and now final probability is that multiplication. Okay, so the P is equal to P of A is equal to P of A1 multiplied by P of A2, and it is equal to 1 by 3 multiplied by 1 by 3, so it is equal to 2 by 3. Okay, yes, okay, this is for the with replacement. Okay, now we are going to second question without replacement. Okay, write down it. Okay, done. Okay, chalo, without replacement. Okay, so in this first of all the event A1 is that same as here. Probability of the selection of first screw is the defective and it is denoted by P of A1. Okay, I can write shortly it. Okay, P of A1. Now total number of favorable outcome upon total number of the possible outcome. Yes, we have to select a first screw and it is defective. Okay, we have to find the probability of the selected first screw is the defective. So how many number of the favorable outcome? M is equal to, we have to select one screw, first one screw out of 4 defective screw. Yes, so it is number of the favorable outcome is equal to 4C1. Now how many number of the total possible outcome? It is equal to, we have to select first screw out of total 12 possible screw, out of total 12 screw. Yes, so the probability is same as previous case, is equal to 4 by 12 and it is equal to, okay, same as 4 by 12. Okay, now question is that we have to select a second screw and which is defective but without replacement. Now we have to find probability of the selection of second screw is defective by which method? By without replacement. क्लियर? ओके, तो हमने यहाँ पे जो पहला स्क्रू सिलेक्ट कर दिया है, यस, वो अब हमको फिर से बॉक्स में नहीं रखना है और अब हमको दूसरा स्क्रू है वो सिलेक्ट करना है।
यस, बिकॉज दिस सिलेक्शन मेथड इज द विदाउट रिप्लेसमेंट। पहला जो हमने स्क्रू सिलेक्ट कर दिया उसको बॉक्स में नहीं रखना है और अब हमको दूसरा स्क्रू है वो सिलेक्ट करना है। ओके, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A2 इज इक्वल टू m by n। ओके, चलो, वी हैव टू सिलेक्ट वन स्क्रू, सेकंड स्क्रू मीन्स द वी हैव टू सिलेक्ट वन स्क्रू आउट ऑफ हाउ मेनी टोटल डिफेक्टिव स्क्रू? 4? नो, आउट ऑफ 3 डिफेक्टिव स्क्रू। यस, बिकॉज एक डिफेक्टिव स्क्रू है वो तो हमने ऑलरेडी सिलेक्ट कर दिया हुआ है और अब वो हमको बॉक्स में नहीं रखना है, वो तो अब हमारे पास है। क्लियर? पहला जो डिफेक्टिव स्क्रू है वो तो अब हमारे पास है, उसको हम बॉक्स में नहीं रखते हैं। यस, तो दूसरा जो हमको डिफेक्टिव स्क्रू सिलेक्ट करना है वो किस में से करेंगे? बाकी के जो 3 स्क्रू बॉक्स में है उसमें से करेंगे। क्लियर? सो वी हैव टू सिलेक्ट वन स्क्रू आउट ऑफ 3 डिफेक्टिव स्क्रू। यस, समझ में आया डिफरेंस बिटवीन द विदाउट रिप्लेसमेंट एंड द विथ रिप्लेसमेंट? देयर इज अ 4C1 बट देयर इज अ 3C1। ओके, एक स्क्रू है वो कम हो गया क्योंकि वो तो अब हमारे पास है, वो तो उसको तो हमने बॉक्स में रखा ही नहीं है। ओके, नाउ n is equal to total number of the favorable outcome. Total number of the favorable outcome, how many it will be? We have to select one screw out of 12 screw. No, we have to select one screw out of 11 screw. क्यों? क्योंकि हमने जो यहाँ पे एक स्क्रू है वो तो पहले से ले लिया है और वो कौन सा स्क्रू है? डिफेक्टिव स्क्रू है। यस, तो टोटल स्क्रू कितने थे? 12 स्क्रू थे। यस, तो उसमें से 4 थे वो डिफेक्टिव थे और 4 में से एक हम डिफेक्टिव स्क्रू है वो तो ऑलरेडी हमने ले लिया है। तो टोटल कितने स्क्रू है? अब 11 स्क्रू है। यस, सो वी हैव टू सिलेक्ट वन स्क्रू आउट ऑफ द 11 स्क्रू। यस, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द विथ रिप्लेसमेंट एंड द विदाउट रिप्लेसमेंट। क्लियर? Understand it? Okay, so our answer is that 3C1 is equal to 3 and 11C1 is equal to 11. Okay, now find a probability P of A is equal to P of A1 and P of A2. Okay, P of A1 is equal to 4 by 12. P of A2 is equal to 3 by 11. 4 multiplied by 3 is equal to 12. 12 cancel, so it is equal to 1 by 11. Yes, so this for with the replacement, probability of the selection of screw 1 by 1 is equal to 1 by 11, and the without replacement, probability of the selection of the defective screw 1 by 1 is equal to 1 by 11, and with the replacement, probability of the selection of the defective screw 1 by 1 is equal to 2 by 3. Yes, is equal to 2 by 3. Clear? Write down it. Done it? Okay, so keep practicing and we will meet you in next lecture.